Hello everyone. As you know that I'm doing previous year questions from heat and mass transfer. Last class we have seen the first lecture of this. Okay, so here I will cover the questions of gate, engineering services and civil services. This will be for mechanical engineering background people. So I have started with the mode of heat transfer. Okay, so if you have not watched the previous video, please watch those videos as well. Even I'm doing for strength of material. I have completed for the material science previous year questions for these exams, and also fluid mechanics is going on, and I think production is also started. Similarly, all the subjects like the theory of machine, industrial engineering, machine design, all subject. Okay, a power plant. Every subject previous year questions you will get here. Not only the previous year question but complete lecture series as well. Okay, so I'm I did master from IIT Bombay and I work as an assistant professor in the mechanical engineering department. Okay, so let's see today's questions. Okay, so this is like engineering services question. You can see here. Thermal diffusivity of a substance is inversely proportional to the thermal conductivity or directly proportional to the thermal conductivity. See, अभी अगर आपको theory नहीं पता है, don't worry, I will soon start complete lecture series for these subjects. Okay, first I am doing the previous year question, subsequently I will do the lectures as well. Okay, so please wait for some time. Those who are preparing for gate exam or engineering services, or even if you're in university, which is especially if your branch is mechanical engineering, definitely you will get a lot of benefit from this channel. Okay, so thermal diffusivity directly proportional to the square of thermal conductivity, inversely proportional to the square of the thermal conductivity. See, this is nothing but is the expression for the thermal diffusivity, which is alpha is equal to K by rho Cp. Okay, please remember. So accordingly, as per from this, you can give the answers. You can see the relation between thermal conductivity and thermal diffusivity. So thermal conductivity is actually proportional to the thermal diffusivity. So the answer will be B. Okay, so as per the formula you can easily derive the answer. Next question, again same, I think the same formula they have asked. Which one of the following expression the thermal diffusivity of the substance in terms of thermal conductivity K, or mass density rho, and specific heat C. Okay, so it's nothing but is the previous question, the formula that which we have seen in the previous question that they are asking here. So it is nothing but is the C, alpha is equal to K by rho C. Okay, see, rho C is also known as heat capacity. Okay, we'll see once I will do the complete lecture series, we will see how this works. Okay, what is the physical significance of thermal diffusivity. Okay, these things we'll see. So okay, so the answer is C. Next question. Okay, see here is the match list question. We have to match list. Okay, so different numbers is there: Schmidt number, thermal diffusivity, Lewis number, Sherwood number. Okay, देखिए in these kind of question either you remember these numbers formula. So even though if you don't know, if you know one or two, you can easily answer. Okay, so this is like K by rho CPD, or HL by D, mu by rho D, and K by rho CP. So we'll solve this question. Okay, so these are the notification which is given, like notations based on these numbers. Okay. See, देखिए thermal diffusivity we know that, okay, it is K by rho Cp. अगर elimination method करते हैं
So 4 किस में मैच है, like 1 B is matching with 4, B is matching with 4, see, so A और B तो गया, ठीक है, बचा 3, C और D बचा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें एक और पता चल जाए तो वी कैन इजीली आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये है इसका मिड नंबर जो होता है इट इज़ K बाई रो CPD होता है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शंस में देखो आप, दोनों में 3 और 4 कॉमन है, सो तो हमें मिल गया। अब ये दीज टू विल डिसाइड लोएस्ट नंबर एंड नो सरवुड नंबर विल डिसाइड। सो देखिए जो one second, I think I have made some mistake. This is actually C, okay, sorry, this is actually C, okay, and this lowest number is 1, okay, lowest number is 1, that is K by rho CPD, okay, and the Sherwood will be the 2 HL by D, so the answer is D, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है, इट इज़ एक्चुअली मिड नंबर इज म्यू बाई रो डी, ओके। सो देखिए मैच लिस्ट काफ़ी इजी होता है, अगर आपको 2 नंबर पता है तो यू कैन इजीली गेट द आंसर, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि चारों आपको पता होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ टाइम 2 अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली गेट द करेक्ट आंसर। अगेन इट इज़ मैच लिस्ट, ओके। Momentum transfer, mass transfer, heat transfer, thermal diffusivity, kinematic viscosity and diffusion coefficient, ठीक है। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना आपके, इन तीनों की यूनिट सेम होती है, विल सी इन द कंप्लीट लेक्चर सीरीज, ओके। और सो इस वजह से यहाँ पे ये पूछ रहा है अलग अलग इन द मैच लिस्ट, ओके। इसका जो होता है देखिए मोमेंटम ट्रांसफर इट इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, यू नो दैट। मास ट्रांसफर इट इज़ एक्चुअली डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड हीट ट्रांसफर जस्ट नाउ वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन थर्मल डिफ्यूजिविटी, सो द आंसर इज ए, ओके। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखिए इसमें असर्शन रीजन है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। इन ML or TQ system the dimension of thermal diffusivity are this। देखिए ये एक्चुअली मैं विल टेल, ये तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इट इज़ डायमेंशनलेस, नो, इसका डायमेंशन होता है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया, इट इज़ एक्चुअली यू नो m² बाई s होता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस, इट हैज़ द डायमेंशन, और इसकी जो यूनिट है यही होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मैंने बोला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, सो इट इज़ L² into 10 to the power -1, so ये चीज़ करेक्ट है, so the answer is D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इसमें कुछ पूछेगा, विल सी दैट फर्नेस इज मेड ऑफ रॉड ब्रिक वॉल ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर and conductivity of 0.7 watt per meter Kelvin for the same heat loss and temperature drop. This can be replaced by a layer of diatomic earth of conductivity of 0.14 watt per meter Kelvin and thickness, ठीक है। ओके, सी यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि थिकनेस कितना होगा, ओके। सो कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट यूज यू नो Fourier law of conduction, okay. So this is K A dt by dx, just equate for brick, and for diatomic we have to equate, okay. So the temperature drop is same, okay, temperature drop is same, and thermal conductivity is given for
for for red brick and for the whatever diatomic is given, area will be obviously common. ठीक है, एक का दिया हुआ 0.5, एक का नहीं दिया, दूसरे का पूछ रहा है. So just simplify, you will get delta x is equal to 0.1 meter. So the answer is B. कुछ नहीं करना, just equate the Fourier law of conduction for both the red brick and diatomic, will get the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैच लिस्ट बोल रहा है, 4 फिगर्स दिए हुए हैं. ओके, ए बी सी डी एंड दैट वी हैव टू मैच लाइक कौन सा किसके लिए है. बाय हाई कंडक्टिविटी फ्लूइड, लो कंडक्टिविटी फ्लूइड, इंसुलेटिंग बॉडी, कॉर्ड हीटर. सो दीज आर द 4 और इसको मैच कराना हमें इन चारों से कौन कौन सा होगा. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया हुआ है. सो विल सी हियर. देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है वही चीज़ आंसर है. हाई कंडक्टिविटी हीट फ्लो के लिए पहला ही होगा. ओके, फिर उसके बाद लो कंडक्टिविटी फ्लूइड के लिए बी होगा. फॉर इंसुलेटिंग बॉडी के लिए सी होगा एंड फॉर गॉड हीटर के लिए डी होगा. जैसे दिया हुआ वही आंसर है. सो द आंसर इज ए. ठीक है, अब आप मेरे से ये मत पूछिएगा क्यों, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस आप याद कर लो इसका कोई. अब या तो आप इसको एक एक केसेस में करके प्लॉट करो. इट्स लाइक नॉनसेंस काइंड ऑफ थिंग. वो काफ़ी टाइम ले लेगा. इक्वेशन बनाओ फिर वो करो, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स. सो यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, यू हैव टू मेमोराइज फ्यू थिंग्स. हिंदी में बोलते हैं इसे रटना है चीज़ों को. तो कुछ चीज़ों को रटना है, दैट वी हैव टू रिमेंबर और मेमोराइज फॉर लॉन्गर टाइम, or especially for the prelims examinations.